Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video I'll teach everything in detail about the tenses and its three types. Please make sure to watch this video till end. अगर आप ये वीडियो बीच में ही छोड़ दोगे तो आपको हाफ पता चलेगा, आपको पूरा पता नहीं चलेगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली टेंसेस होते हैं थ्री टाइप्स के. प्रेजेंट टेंस, अभी जो है वो, अभी जो ड्यूरेशन चल रहा है वो. पास्ट टेंस जो यस्टरडे था वो, और फ्यूचर टेंस दैट इज़ टुमारो, कल होगा वो. तो हर एक टेंस के अंदर 4 टाइप्स के टेंसेस है, तो वो मैं आगे कवर करता जाऊंगा. तो पहले हम ले रहे हैं, विल टेक प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट in present tense there are 2 types of verbs, that is helping verb and main verb. Not in present tense, in all the tenses there will be 2 types of verbs, that is helping verb and main verb. So present tense के अंदर helping verb में कौन से verb आएंगे तो मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ. is, am, are. तो ये 3 वर्ड है वो आएंगे helping verbs में, प्रेजेंट टेंस में, और अलग से ऐड होंगे हैज़ एंड हैव. तो ये थे बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब्स थे प्रेजेंट टेंस में वो. और जो मेन वर्ब्स की बात करते हैं तो मेन वर्ब्स में कौन से वर्ब्स आएंगे तो जो नॉर्मली होते हैं, रन, भाग रहा है, दैट इज़ स्विम. जो मेन वर्ब्स, जो बेस फॉर्म ये वर्ब है उसका बेस फॉर्म उसे बोलते हैं मेन वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में, मेन वर्ब्स. फिर बोलते हैं टॉक. वैसे जो मेन वर्ब्स आएंगे जो प्रेजेंट टेंस में होंगे, जो मेन वर्ब्स होंगे. अब इसके रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप्स कौन से हैं, प्रेजेंट टेंस में कौन से टाइप्स हैं. तो जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, मैं इधर एग्जांपल लिख रहा हूँ. ही इज़ अ बॉय. ही इज़ अ बॉय. इसमें वर्ब कौन सा आएगा तो इज़ वर्ब आएगा और उसका टेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये हो गया एक हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल. और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक मेन वर्ब का. तो मैं इधर लिख रहा हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो इसमें अपना वर्ब हो गया राइजेज और उसका टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. याद रखना है एक वर्ब अकेला अगर आएगा उसे भी प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और अगर पीछे एस भी ऐड होगा तो उसे भी प्रेजेंट टेंस में लिखना है. तो ये था बेसिक सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एकदम सिंपल, उसके नाम जैसा है सिंपल. अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा. तो जो सेकेंड टाइप है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि अभी वो एक्टिविटी चल रही है, द एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन, इट इज़ इन प्रोसेस. सो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ इधर. ही इज स्विमिंग इन द लेक. तो इसमें वर्ब हो गया इज स्विमिंग. अब इसके अंदर मेन वर्ब क्या होगा तो होगा स्विम, और उसका कंटिन्यूस फॉर्म क्या हो जाएगा तो पीछे हम आईएनजी लगा देंगे. जो भी मेन वर्ब होगा उसके पीछे हम आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा कंटिन्यूस टेंस. वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इन कंटिन्यूस टेंस वी हैव टू कंपल्सरी राइट हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट ऑफ द मेन वर्ब बाय एडिंग आईएनजी टू द मेन वर्ब. सो ये था एक एग्जाम्पल. और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. द बॉय इज टॉकिंग टू हिज मदर. तो इसमें अपना वर्ब हो जाएगा इज टॉकिंग, और इसका जो बेस फॉर्म होगा मेन वर्ब होगा वो होगा टॉक. तो उसका कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा टॉकिंग, पीछे आईएनजी. एंड द पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब फॉर दिस इज द बॉय इज सिंगुलर, सो विल राइट हियर इज. ये एक ही है तो इधर लिखेंगे इज. अगर इधर बॉयज होता तो फिर लिखते आर. So let's see the third type of present tense. So here the third type of present tense is present perfect tense. You have seen earlier that I have written here has and have separate. It's for this perfect tense. So I will write here something. He has
completed his work. So here आप देख सकते हो, इधर I have written has. So जो has और have इधर लिखा था, मैंने इधर मेंशन किया था, वो आएगा अपने प्रेजेंट टेंस में. So the reason I have written has and have different because it includes in perfect tense. So if the noun is singular, so we'll write has, and if the noun is plural, we will write have. So in this case the noun is singular, so we have written he has. और जो main verb होगा, the main verb here, the main verb is, so here the main verb is complete, और जो main verb होगा उसको हमें convert करना होगा past participle में, that is completed. जो भी main verb होगा, any main verb, we have to convert it into past participle, so it will become here completed. So here the sentence will be he has completed his work. I am writing here the second example. So we have started the project. So in this case, have denotes that this sentence is in present tense and the base form of started is start. We have to convert it into past participle, so we have written here started. So this is the whole main verb, this is helping verb, and this is main verb in past participle form. And the last present tense type is present perfect continuous. I know it's a long name to remember, but it's easy. See, here is present tense and here is perfect tense. आप इधर पहले ही देख सकते थे कि मैंने present perfect tense के अंदर has and have यूज़ किया, and yes, your guess is right. इधर भी हम has and have ही यूज़ करेंगे. मैं इधर लिख रहा हूँ he has been completing his work. So in this scenario, has denotes that it is in present tense and ing denotes that it is in continuous tense. So इधर हमें एक word add करना रहेगा, that is been. So present perfect continuous tense denotes has been completing. So he has, it is present tense because it is singular, and ing here is continuous. So the base form of this is complete. And we will take here the same example in this. So we'll write here we have, yes you are correct, been, start the base word and plus ing, that is starting the project. So here have denotes it is in present tense and ing denotes it is in continuous tense. So that's it. So we'll continue to past tense. Similarly in present tense there are again two types, helping verbs and main verb. So I'm writing here helping verb was and were, that's it, and separately had, yes that's it, you guessed it correctly. And main verbs are saw, ran, then swam, then told. Yeah, that's the main verbs of past tense. It's already completed. So we'll quickly see the types of the past tenses. So the first type of past tense is simple past tense. वैसे हमने पहले देख लिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता था, जो मेन वर्ब थे वो और जो हेल्पिंग वर्ब थे वो. सेम गोज विथ हियर. ही सॉ द टीचर. In this case saw is our main verb and it is in past tense. As we say on the helping verb, we'll write here they were in the class. So in this case where is the helping verb and it denotes it is a past tense. Moving on, in this case past continuous tense, again helping verb and ing to the main verb, same. He was going to the school.
In this case, was denotes it is in past tense and ing denotes it is in continuous tense. Another example, we were singing in the room. So in this case, were denotes it is past tense and ing denotes it is in continuous tense. So let's see the next two. So here will be he. The reason I wrote had separate here because of this. So he had done his work. So in this case, the base of this verb is do, and the past participle, the one we discussed in present tense. So here past participle. So the past participle of do is done. One more, we had completed the notes. Here had denotes it is in past tense and completed, that is past participle, the base form of completed is complete. So the complete will change into past participle. Okay, moving on. Past perfect continuous. Again, he had been doing the work. So had here denotes it is in past tense and perfect tense, and ing here it denotes it is in continuous tense. Do plus ing, continuous, and had been, had is perfect continuous tense. Another example, we had been completing, yes you are right, the notes. So here had denotes it is in past perfect tense and ing complete plus ing. Moving on to the last but the not least tense. Again I'll write here will, shall, may, can, and here there are no main verbs because the main verb will itself be in present in the verb. So let's see its examples. So simple future tense, he will make a boat. So in this case, will denotes it is in future tense and make is as simple as the main verb. It is simple. It will not be changed into past participle in future tense. Make sure. The next example will be they will go to picnic. So in this case again will is future tense and go is in form of main verb. Second continuous tense will be he will be making a boat. So we have to add a simple be in this sentence to make the proper sense of the sentence. So will here shows that it is in future tense and ing shows it is in continuous tense. Second example, they will be going to picnic. So here will denotes it is in future tense and ing denotes it is in continuous tense. Let's see the last one. Here it is future perfect tense. So we'll write here he will have his work. So here will denotes it is in future tense and have denotes it is in perfect tense, and the past participle of do is here done. Another example, they will have gone to the picnic. So in this case will show that it is in future tense and have in perfect tense, and the past participle of go is gone. तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. एम रखते हैं 20 लाइक्स पे, आप कर दोगे.
और आपके जो छोटे भाई बहन है उन्हें भी बताना, ये वीडियो उनको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो थैंक यू।